Hello and welcome. You're watching Business Today Television. This is Market Today. I'm Sakshi Batra and with me is Shell Bhatnagar. Well, this week began with the deep Monday blues as yesterday we saw a sharp market fall with the benchmark indices dropping about 1.5% and 2% for the Nifty Bank as well. And this was all caused by a few factors like the HMPV virus outbreak in India. That caused a little bit of nervousness amid investors. We also saw the weak Q3 business updates from banks leading to anticipation of probably disappointing earnings that could come in Q3. There was also the weakness in the rupee and of course the lack of support from global cues. All of that together led to the steepest single day drop for the benchmark indices in the last 3 months as of now. As of course, there were the FPI flows that continue to disappoint the Indian investors as well. Now, as we move into today, there's again going to be a second day which we will continue to look at because the cases of HMPV are rising. Now they are 7. So we'll see how the markets really look at that. Of course, the FPIs again continued to sell off in yesterday's trading session as well. And of course, all eyes will be on the macros. Remember, it'll be important to now track the advanced GDP numbers just 3 weeks ahead of the union budget. All eyes will be on the National Statistics Office, which is going to be unveiling the first advanced estimates of FY25 GDP numbers. So we'll see how all of these factors come together. Although there's one positive that the global cues are slightly more positive than yesterday. Good morning to all our viewers and good morning, Shell. Good morning, ladies and gentlemen. It is still not clear why we saw so much of price damage yesterday, despite the fact that DII purchases stood at 5,750 crore rupees. Our domestic friends who invest your and my systematic investment plan actually purchased twice the amount that foreign institutional investors sold, which was 2,575 crores. Domestics bought 5,750 crores, more than twice. And this is the highest number since November 28. So this was probably a one-off selling spree that happened. The price damage was more than what the volume numbers suggest. Therefore, let us hope for a sharp bounce back today. This unnecessary fear created in the market about HPMV virus. Sakshi, everybody coughs and sneezes in this market and this climate which is now full of pollution. So all that people did was take that template and put it on India, and believe me, this virus has been here for thousands of years, but we have come to know of it over the last 25 years, and now we are unnecessarily nitpicking. Be that as it may, the market is now available at 23,616 on the Nifty and 49,922. What also happened dramatically yesterday was that all hospital stocks and all diagnostic chains like Lal Pathlab, Apollo Hospitals, Medant, Narayan Hridayalaya, Fortis, Infrust Medical showed signs of activity on the long side, mainly because of this virus fear, which to my mind will disappear in a day or two, and we will be left saddled with the unnecessary pain that has come in the market. So domestic institutions are providing much needed support to the Nifty and the Bank Nifty, which unfortunately remain in a bear grip. Look at the way DIIs have purchased yesterday. Now let's hope that the focus returns on budget themes, the focus returns on actual Q3. We'll have numbers coming in from Tata Elxsi, Ireda, TCS and GM Breweries, to name a few, in the next 1 or 2 days, and that is what the market is concentrating on. Even the numbers of business updates provided by PSU banks were not so bad as to see a 4 percentage point cut in the Nifty PSU banking index. In fact, many of the business updates that came in were actually modestly good. But Bhav Bhagwan hai, as I have often said, and we have to respect what price has told us. Be that as it may, let's hope for that budget themes to come into picture. Pharma and IT will be in top shape. Remember, the IT index was actually up 400, 500 points yesterday before selling pressure came in, and it has shown the least amount of fall, only 0.1% lower.
51 points down at 43,674 in the market yesterday. So keep themes in mind. This is the budget theme that is going to come into play. Therefore, PSU stocks which have been beaten black and blue. Sakshi and I track 88 PSU stocks. Out of 88, only 2 were in the gains yesterday. ITI up 20% and Kudremukh Iron Ore Company, which is running on the back of news coming in from the Steel Ministry that there might be a merger between Kudremukh and state-owned NMDC. That was up 7%. Only these 2 stocks rose. Everything else was beaten black and blue. So the budget theme via the PSU space, which is railways, defense and banks, a weakening rupee, therefore Pharma and IT, and of course the third quarter numbers. With that in mind, just forget the indices for a moment. Don't buy this market in the hope of very quick returns. Now we are in a pause reflective mode as far as Indian equities are concerned. Gains will be piecemeal, far in between, and will be very difficult to hack. So this is a time that Sakshi and I have to pass in the market in the hope that better days will return. Sakshi, we are 18 sessions away from the February 1st budget. Let's hope the market makes the most of it. Sakshi. Shell. So let's look at how the global cues are shaping up. In the US, remember, the S&P 500 rose by about 0.5% overnight and Nasdaq surged by 1.2%. This was all driven by robust performance in tech stocks. The Dow Jones, however, slipped by 0.06%, reversing earlier gains and reflecting the mixed investor sentiment right there. Of course, following this, we actually saw the Asian markets also rebound in trade. In the morning, the Nikkei was trading about 1.7% higher. Right now it's at 2.5% up, so it's further built on the gains. Chinese index is down by about 0.46%. Hang Seng is down by 1.7%, but the Kospi is up by 0.9% as well. So that's the kind of move that we are seeing. GIFT Nifty is also pointing out to a positive start right now, indicating a 24,800. That's a 0.25% uptick. We hope it gets back to those higher levels as well. As far as the crude oil prices are concerned, again, they slipped a bit, just about 0.2% to $76.3 a barrel as far as the Brent crude is concerned. And the WTI fell by about 0.5% to $73.5 a barrel, halting that 5-day rally that was driven by weaker dollar and the winter storm that was that's driving the energy demand as well. So apart from this, we'll keep an eye out on some of the stocks. Coal India has signed a non-binding MOU with IREL India to collaborate for mining, extraction and refining. We'll keep an eye out on Bharti Airtel as well. It's signed share purchase agreement with iBus Network and Infra for transfer of company's 50% stake in Firefly Networks. Macrotech developers will be in focus. The realty firm has achieved its highest ever quarterly pre-sales of 4,510 crores in Q3 of the current fiscal year, and that's up 32% on a year-on-year basis. So again, all eyes will be on that. Yesterday, the stock dropped by about 3.8%. This could lift some sentiments there. Power Grid has been declared a successful bidder for 2 projects to establish interstate transmission system under build, own, operate and transfer business. That's BOOT basis as well. So we'll keep an eye out on Power Grid. Arcade Developers, the company will redevelop 3 residential projects in Mumbai. It expects to generate a revenue of 2,150 odd crore rupees. We'll keep an eye there. Info Edge, the parent company of Naukri.com, has reported standalone billings an increase of 15.8% to 668 crores from a year ago. And its recruitment solutions business has also grown by over 15% to 494 odd crore rupees as well. So we'll keep an eye out on that today. MobiKwik and GM Breweries will be coming out with their results, so we'll keep an eye out on that one as well. Apart from this, we'll keep an eye out on Titan. Remember, yesterday it was outperforming and bucking the trend in an otherwise weak market. Macquarie has given an outperform rating with a target price which has raised to 41.50 for Titan. They believe demand strength across jewelry, eye care segments shared in the third quarter's healthy sales of 21% is showing continued improvement in the demand going forward from here. Zomato is going to be in focus. Jefferies has in fact downgraded the stock to hold with the target price that they've slashed to 275 from 335 earlier. And they've also cut Blinkit's EBITDA forecast sharply by FY26 to 27 as well. They're also looking at entry of newer players, higher discounting that may pose a medium-term threat on the company. On Hyundai Motors, Citi has a
initiated a buy rating with a target price of 22.50. They believe positive stance is predicated on strong parentage, diverse model lineup with greater proportion of SUVs, focus on premiumization, wide sales and service network, strong brand and potential upside from exports as well. So those are some of the stocks that we'll keep an eye out on today. Share. Ladies and gentlemen, with us is a very seasoned watcher of the market, Mr. Dharmesh Kant, Head of Equity Research at Cholamandalam Securities, is with us. Good morning to you, sir, and a very warm welcome. Happy New Year. Great to have you in the first week of Jan, which has been a step back for equity markets. How do you see sentiment on Dalal Street, and how do you explain yesterday's fall? Yeah, good morning, Shailja. Good morning, Sakshi, and good morning to all our viewers. Happy New Year to you all and your family. See, yesterday the fall, I mean, what I see and what after the aftermarket, whatever discussions we had with select HNIs, people are now suspect of the earnings trajectory. That is the one reason. So earlier what was happening, though they were excesses in the market, but since the earnings trajectory was intact, so people were buying on any small correction which was coming in the way. Yesterday's correction was primarily now people are tentative of any news flow which can have a potential impact, which is not ascertained as of now, but if it can have a potential negative impact on the market, so people are just, uh, I mean, downloading their trading bets. Investments are still intact. There is no problem with the investments, and people are still looking at good investment opportunities, which has been narrowed down. I will just give you a small illustrative of what I just said. We have seen the bank business update. Standalone, if you see number on number basis, they all are very, few are very hunky dory kind of a number, 20%, 30% kind of a growth they have reported. But look at on an aggregate basis. Private sector banks, around 11 of them have reported the business update. The aggregate level, 2,50,000 crores of advances have grown on year-on-year basis. That is 6-7%. HDFC Bank, which has a book size of 24,50,000 odd crores, their advances grew by only 3%. Usually they go by around 13-14%. So 10% if you take of that is around 2,50,000 odd crores. So the business which they did not do for whatever reasons, maybe it was because of credit deposit ratio or it was a conscious call where they were not very comfortable with the credit lending which is happening on the unsecured part of the business personal loans. If they lost that business, that is what has been grabbed by the others. So had HDFC Bank been, more participative, the numbers individually would have been very bad. So the question which is left for us to answer is whether this new business which, banking space is having, whether the quality of that earnings is sustainable or not. So, I mean, these kind of queries have started coming up, discussions and deliberations on the same is happening on the market. So, what I see, I will tell budget is through. So, the government has to do something actually good to pull this market from this nervous zone. So that is how it has to be. So Shalji, you rightly said, we have to wait for, good days, and slight negative news is having its day on the run. So we have to be mindful of that fact as well. Tentative market, volatile market, it would be the nature, but one has to be constructive in this market because there are many companies which you are getting at now very good prices value wise. And I do think maybe one more quarter, two more quarter can be bad, but thereafter the economic consolidation which happens in a normal cycle should be through, and then we will again be back on a trajectory. So if one is investing, one should be prepared. They may be prepared to lose 10-5% more from their current levels. So if you are not worried about that, then this is a very good time to start sowing the seeds of investing now. Very good morning to you, Dharmesh, and Happy New Year to you as well. Thank you so much for extending your warm wishes, and we hope that in 2025 you continue to guide all our viewers of Business Today television even more than 2024. We see you more often right there. As we begin this new year, there is this new health scare that has emerged, HMPV virus. Now there is a debate whether the markets are taking that very seriously. Is it a thing to be worried about? Is it second COVID? All of these things are floating around. But looking at what really, outperformed yesterday was probably with the lowest kind of fall was Pharma as well.
Do you think with this kind of a newer health scare, again, pharma will be in a tailwind? It was an outperformer in 2024. Should one continue to keep their fresh bets on the pharma pack yet again? And hospitals, diagnostics, what exactly would you be really looking at here? Yeah, good morning, Sakshi. It's always an honor and a pleasure to be on Business Today TV show. So, in fact, I am honored to be a part of your channel. So, having said that, I mean, as far as yesterday's, see, HMPV, whatever my understanding is, limited knowledge which I can gather, this has been there in existence for quite some time, and it's not a new virus. And diagnostic chains already a patient with comorbidity, wherever it is there, they are subject to this routine testing. So, I mean, even government has clarified it's wrong to report that first case, second case, it has not, it's a wrong reporting method. And people are, they are finding reasons to run it through. So we don't know whether there is a mutation of this virus which can create a COVID-like scare. So these are all speculative. Even the pictures which are circulating for China, there is no authenticity that this has been recently recorded or is a pre-recorded. Nothing is very clear on that count. So I think, see, if you take COVID example, the lesson which we learned was that fall, if somebody is bought into in that kind of a scary fall, multi-baggers was the fall, the opportunity which came through after that. Similarly, I think this will also be, taken care of. So, I mean, it's very difficult to say on the virus part because mutation part nobody can answer as of now. But whatever the preliminary reports are there, I don't think this is that scary a market. So, as far as pharma and diagnostic chains and hospitals are concerned, there was a trading bump up which may continue for some time because this is definitely, as per reports, this will grow a further bit, and that will keep especially the diagnostic chains busy with a new source of testing, and again a new income will be there. So they, Dr. Lal Path Labs and others in the bracket, Metropolis and all, can have a trading traction. That is what I feel. Hospital chain, we have been, bullish on. So we have a coverage on one of them, that is Narayana Hridayalaya. So we continue to remain bullish on that. Not for this reason, not for the virus reason, but for the business as it is shaping up for that chain. Pharmaceuticals, I don't think this can be the reason to lead a rally out there. Too early to call it, but still I'm sticking my neck out. But pharma as a pack, I think, will do better in 2025 as well, just for the consistency of the income which they have been reporting. And there, I think the topics can be Aurobindo Pharma, Sun Pharma, and Asepla. So these are the three companies which we like over a period of 1 year holding period. Dharmeshi, Chola has a lot of institutional and retail clients as well. What are you telling them in terms of hand holding for 2025? It's fairly apparent now that we are a sell on a rise market and nothing seems to be working for more than a day or so. You have flashes of brilliance in individual stocks, but overall market is in a sliding mode. Small cap index had hit a record high in early December. Now it is down 7%. Individual stocks are damaged as well, and yesterday's fall was very painful for many portfolios. What are they asking you, and what are you telling them? I mean, one thing is very clear, 2025 will be a difficult year. It won't be an easy year as far as, earnings are concerned. If liquidity comes through stock prices, again, you will see the same action which we saw in 2024 till September. So, a function of liquidity, if you minus that, if you make it a pure rational market where demand and supply of liquidity and the demand of stocks are the same, then it will be a difficult year on the earnings trajectory. And there, I think two factors merit attention. One is quality and the other is consistency. So the quality, when I say, I mean the quality of the business which you are into. And there, I think engineering, research and development kind of companies, whether it is in automobile sector or whether it is in the IT space or even in EMS space, these are the sectors which will continue to do. EMS, unfortunately, the companies which are there, their valuations are very expensive. But I think 2025, 26, 27, next 3 years, the trend will continue the same. There was a lot of activities happening on that front.
A lot of businesses are coming back to India, and if this virus scare is there in China, then this is again an added, China plus one, and the business will shift to India, because India, even in COVID times, did pretty well when compared to a country like China. So these are the select pockets where one should be laying focus on. Infrastructure definitely will do well. So to name you a sector, apart from defense and railway infra, where we were bullish on, EMS is one segment which we think will pick up in a big way. And technology, when I say IT, I don't mean the real, I mean only the software developers like TCS, Infosys, and SCL. You have to look beyond that. You have to look at KPIT technology, you have to look at Tata technology, Tata Elxsi. Companies like this, which are into a new age technology, whether it is automobile or other means of AI and ML learning. So wherever these things are happening, they will do well. Other than that, pure consumption play and even banking plays will be a difficult spot to be in 2025. Earnings outlook, Dharmesh ji? Right. We look at Okay. the pre-open trades, ladies and gentlemen. The Nifty is opening 56 points higher, almost in sync with what the GIFT Nifty was telling us. Will this hold? Only time will tell. Nowadays, you just get so much of selling pressure because of these automated algorithms that it becomes really difficult to navigate the market. In top form, Bajaj Finserv amongst the top index heavyweights, 1.6% higher. It says the company has given an update about its total premium growth in the third quarter, which now stands at 1,055 crores. Please keep an eye out on that. TCS ahead of earnings, 78 rupees higher, 4168. Remember, IT was the only index which fell the least yesterday. What is Infosys doing? 6 rupees higher. Now let's look at the three index heavyweights. HDFC Bank, 11 rupees lower, 1700. Reliance, thank God, 2 rupees 75 higher, 1290. ICICI Bank, 9 rupees 20 lower, 1255. So it's going to be a painful day for the banks. ICICI, Axis, HDFC are in the red. How about Kotak? Kotak is in the green, but it rarely matters because it has such a low weightage. Let's dip into NSE 500 and then see what is happening. 4 percentage point uptick on Bharti Hexacom, 1550. Apollo Ambuja Cement, 2.7% higher. Shipping Corporation, 3.7% higher, 212. ITI Limited, absolutely undescribable. Again 3% higher. Remember, yesterday it was up 20%. Day before yesterday on Friday it was up 14%. So the rally continues. This is how it is. Let's take a detour into FNO and then get back to Dharmesh ji. Naukri.com, 16% uptick in billings for the quarter gone by, 3% higher, 9,060. This is again headed for a record high. I don't see Pharma in top gainers. Just across the board, you have Gas Authority of India, 2.8% higher, 190. Gas Authority of India has one of its subsidiaries that is applying for an IPO. That subsidiary is also partially owned by BPCL. So keep an eye out on GAIL and BPCL. This is all I see. Sakshi, anything that you are observing? Then we'll get back to Dharmesh ji. Well, yes, Dharmesh ji, I also wanted to check with you. How are you looking at these quick commerce giants like Zomato and Swiggy? Zomato has got its first downgrade of 2025 from Jefferies, where they have cut the target price to 275, looking at the higher competition that it is going to be looking at, and they've also cut Blinkit's EBITDA forecast sharply as well. How are you really looking at Zomato? It used to be the top favorite stock of traders, investors, and even analysts for 2024. It's really performed very well. What's the outlook now? Sakshi, the outlook remains positive. I mean, there can be some disruption in the short term, 6 months to 1 year after Amazon, gets into the pan-India mode. But I don't think this market is small. This market is large enough, and still the penetration levels have not gone too high. So there will be organic growth for all. So you need not rely on inorganic growth or inorganic kind of a competition eating into your market share.
So I think it's just that stock price has taken a bit, and there may be some resetting as far as the profitability margins are concerned. But post that resetting, 1 year, 6 months of our trouble, things will be back into upward trajectory. And I think about, to our estimates, this market is 3x than where it is as of now. So with 3x kind of and path to profitability is already demonstrated by Zomato. So it will return to profitability. One has to be a time investor. You should not look at this stock for say those days are over. I mean trading days are over. Now one has to be an investor for 3 to 5 year kind of a perspective. Between Zomato and Swiggy, we like Swiggy more because of the valuation comfort it enjoys over Zomato. So the idea would be to have a basket buy both, but the ratio mix should be 60% in the favor of Swiggy and 40% in favor of Zomato. Uh, Dharmesh, when you look at the longer term picture of the market, do you think bonds, which is a good long term bond fund, and fixed deposits, could they be the outperformers for 2025? And if yes, any good bond fund that you would suggest? Shalini, I'm not an expert on the bond market. Theoretically, what I can say is post this correction which has happened, there is a chance because we are sitting at high interest rates. So any cut in interest rate will give you a capital gains kind of an appreciation if you're holding a bond. So maybe, I mean, just sitting where we are right now, it does look like 2025 will belong to bonds rather than equities as far as absolute returns are concerned from a 1 year holding period. Okay, well, we will be looking at the market settling now in the pre-open rates. About the Nifty is hovering about 0.25% higher, 23,676. Again, I also wanted to get a sense on the earnings outlook, Dharmesh ji, from you. What are you penciling in for Q3? Q2 was largely a disappointment. Will that continue in the large part of various sectors that we will see in Q3 as well? Where do you see underperformance and outperformance coming from? So actually, going by the business updates which we have seen, it was a mixed bag individually, which same will be reflective in the earnings. But I do think margins will be, squeezed. It will be further squeezed. Operating margins will be lower this time around. So will be the case with NIMs for all the banks. Even Q2 we have seen there was a NIM contraction of around average around 8 to 9 basis point. Same would be the story this time around as well. But on aggregate level, I do think Q3 sequentially will be better than Q2. So, like Q2, we did an earnings growth of overall Nifty 500 basket, if you say 4.5%. So, this time around, we are looking at around 5.5 to 6% kind of a growth on a year on year basis. So, that will be in line. The only problem is Q4, that is the next quarter, because last year, same quarter had a very high base effect. So even if some catch up happens and some positive momentum happens, still on that base you will having a difficult number to say. So Q3 overall Nifty 50 we are expecting around 6.5 to 7% kind of earnings growth on an aggregate level. And there would be individual outperformance, primarily in banking space. We think ICC and Axis should report a better number after seeing what the HDFC Bank business update was, which will definitely be reporting a lower number this time around. And automobile, we all know the numbers are out, so it would be a lackluster kind of a performance, maybe 2 or 3% kind of a PAT growth on an aggregate level is expected there. Metals, we are expecting a good set of numbers, particularly from the likes of Hindalco and all. But Tata Steel, I mean, the ferrous part would be again a difficult quarter this time because the blended realizations were lower. So Tata Steel, Jindal Steel, JSW Steel and all will report a lower set of a number. Outperformance would come from pharma particularly. I mean, this outperformance is just because they would be reporting a stable set of numbers and maybe IT. So these are the two sectors where the numbers will look optically good because there won't be a surprise growth factor, but stability of the growth, the trajectory which they have been doing. IT may be single digit 8 9% and pharma around 15 16% kind of a PAT growth is expected there. So overall, mixed bag.
But sequentially, if you look at last Q2 growth year on year, Q3 would be a tad better, around 100 basis point or so. Dharmesh, how are you seeing FMCG? There are news reports that Hindustan Unilever is on the prowl to buy out smaller companies. 300 crore turnover, 350 crore turnover of minimalist, and pricing or the deal size is expected to be 3,000 crore rupees. What has gone wrong with these FMCG companies that they are so desperate to give a 10x valuation on sales for companies and products which they should be making on their own? How do you look at this very, very tepid movement that is happening in maybe Lever, Dabur, Marico? Any top picks that you have from this space? Yeah, to answer your second part, what has gone wrong? They are the best one to answer. In spite of having the best of the talents in the world and the best of the money in the balance sheet, they can buy a company for 3,000 crores, having a top line of 350 crores. So something has definitely gone wrong with them, and they want to just kill the competition. I mean, the any competition which is just budding up, they want to capture that and kill it right there. And these type of deals are also a different kind of deals, because 3 years the promoter has to be there in handholding, and the entire technology transfer with knowledge transfer has to happen. So they make sure that again the same knowledge is not passed on. Definitely, the big players are finding difficult to get a foray, and many small local players. I mean, if you follow Instagram and all, you will find many people selling products, and they're selling actually very good. The minimalist is just a case in point where from around 10, 12 crores of our top line to 350 crores, and then the valuation of 3,000 crores they are getting in just 4 or 5 years kind of a time frame. So there are many people who have been doing so, and they have been effectively selling, and the results are also better. So this is one part. The second part is FMCG. Large ones are definitely finding it difficult. So something they have to do on their business model to get it right. Overall picture of FMCG, I mean, this we talked about a personal care, but even the food and beverage segment and the other segment, we think it will be difficult. I mean, single digit volume growth, that on a low single digit, 4 to 5% if they are able to do. And that would be a great news for FMCG companies, and the valuations which they are setting on. I do think there is a trade on here, Shalji. I mean, definitely, if one is getting a basket of, say, Nestle, Britannia, Dabur, and HUL, even ITC for that matter, then definitely there is a trade on. And with if Q3 numbers are a bit, if it disappoints, well, market is now going with what I just said, 5-6% kind of earnings growth. If it disappoints there, then there is definitely a trade on these players, because end of the day they are having a very cash-rich balance sheet. The ROEs are still high, and this business is likely to grow going forward as the situations improve. So they do offer you a trade-off as of now. Okay. Dharmesh ji, also wanted to get a sense on the entire auto space also. Today again, FADA has come out with the December data. Total retail sales are still down 12.5%, and year on year they're down by 45% or so. Beat the two-wheelers, beat the CV space. Even passenger vehicles is down by about 8% on a month-on-month basis. Two-wheelers is down 54% as well. How are you really assessing this? Because, you know, in December sales that we had got from most of these companies, they had also indicated, robustness. Probably highest ever record sales for Hyundai, for Maruti as well. We saw this move coming in. But how are you assessing the continuous subdued sentiment amid the consumers in the auto pack right now? So actually, one problem is that these two set of data, one is the retail sales and Yeah. one is the company to dealer sales. So this creates a confusion in, I mean, in the analysis part. So if you are following one, then you are getting the things right. So we normally follow the company sales to the dealer, and there the December data was a mixed bag. If you look at say four wheelers, whereas Maruti came out with 20. Yeah.
7.8% kind of growth. Hyundai was down by 2.5%. So was the case with CV. Ashok Leyland came with 5.5 to 6% kind of a growth. But Tata Motors was, which is the biggest and the largest player in that basket, they had only 1% kind of growth. I think 0.3% was the right number, if I'm not wrong. So it was all over the places. Two-wheeler, we saw disappointment in Bajaj Auto and Hero MotoCorp. Hero MotoCorp numbers were actually bad. When compared to say a TVS Motor or Eicher Motors, TVS Motor was single digit. Eicher was the only one which reported 17% kind of a growth. So having seen all this kind of a setup, it's still too early to call a long shot on the automobile OEM manufacturers. Electric vehicle sales have also gone down, and the reason for electric vehicle sales going down is because of the gestation period transition to a longer period kind of vehicle. So let's wait and watch. One has to see Yeah. how things pan out in the month of January. Right. 9:16, ladies and gentlemen, the market is upon us. Now, this is a very positive opening. Will this be short covering? Will this last for the day? Now, only time will tell. We are in this volatile phase of the market where nothing seems to be working on the long side, but let us enjoy the bounce till it is there. 135 higher on the Nifty, 23,750 is with the bulls. Nifty Bank, 266 points higher. Better still, Nifty IT, 320 points higher. The NSE 500 is opening 138 points higher. So it's a green tick to start with. And what's really interesting, out of the top 10 index heavyweights, 9 of them are in the green, and that's a very good show. Okay, what is HDFC Bank doing? Flat, 1 rupee 80 higher, 1712. What is Reliance doing? Reliance is for the moment 12 rupees higher, 1228. What is Bajaj Finserv doing post its quarterly update? 16 rupees higher, 1710. In the green, TCS 20 rupees higher. In the green, Infosys 15 rupees higher. That's looking good. How about others? The rest are flat. One good hope for the market is ICICI Bank. This is helping the Nifty Bank as well. 10 rupees higher, 1274. We'll very quickly get into FNO stocks. Kalyan Jewellers is the top gainer, 3.5% higher. Oil India spiking 3.2% higher. Remember, NYMEX crude is above $73 a barrel. That's good news. Biocon 3% higher. Paytm 2.2% higher. HFCL 1.8% higher. What else? Let's go to NSE 500. There's no stopping ITI, 3.8% higher, 566.45. Intellect Design 4.5% higher, 947. These are the ones that I see which are in top shape. The Nifty is taking it away now, 150 points higher. So half of yesterday's loss is now covered in the first 7-8 minutes of trade, 2 or 3 minutes of trade. Let's hope it increases dramatically. Okay, in the top traded, we have Kalyan Jewellers, we have ONGC 3% higher. These are the two stocks that you keep in mind. ONGC and Oil India, because of a perk up in oil prices. Anything else? Yes, Vishal Mega Mart, 2.5% higher. Anything that catches my fancy? Okay, we'll keep these stocks off radar. Indotech Task Momos, 4% higher. Sakshi and I have this running game on Indotech. I always mark this. You have Intellect Design doing pretty well. These are the ones that are in top shape. Kirloskar Brothers 4.5% higher, 2043. Yes, these are the ones that we'd like to mark on air, and so far it's a good opening. Dharmeshji, anything that you can catch in the markets that you're observing is in top shape? Actually, I have not seen the running prices, but as far as buying on declines are concerned, so Reliance Industries is one of those stocks which I think is likely to do well for next 3 to 4 months if you are able to get on declines. And the other stock which, I mean, the banking space, especially the public sector banks, the numbers were around 11-12% kind of advances growth with likewise deposit growth. But yesterday, surprisingly, there was a sharp selling on most of those
counters, be it Bank of Baroda, Canara Bank, Bank of India, Indian Bank and all. So I think there's a basket pie does merits an attention, because last 2 quarters also they've reported a good set of numbers with a firmer asset quality, and they are not into very much unsecured credit. So they are safe from that basket. I think that provides a very good opportunity to get entry, and all as a basket. Only the SBI is one which we are avoiding because of its last time. But Canada, Bank of Baroda, PNB, Bank of India looks very attractive to me at current levels. Okay, Dharmesh, on that note, we will thank you for being with us and sharing with us all those thoughts and ideas. Always a pleasure to host you with us on Business Today. Good to have you. Thank you Thank so you much. so much. And now, viewers, we're going to be getting you another market master. On board with us is Mr. Ashish Chaturmota, the ED and Fund Manager at JM Financial Services. Warm welcome to you, Ashish sir, and thank you so much for joining in. A very happy new year to you, and good to have you right at the beginning of 2025. A lot of our viewers have lots to thank you for. Right in the beginning of 2024, you talked about the Pharma ETF, and we saw how Pharma index outperformed with 40% gains. So all of those who listen to you on the channel, they have definitely a lot to thank for, and this is why we have got you right in the beginning of 2025. So all of you viewers who are actually looking at the sectoral outperformance that Ashish ji will be betting big on, this is where you need to listen to him. Thank you so much, sir, for being with us today. Sakshi, good morning, Shelji, and good morning, all the viewers, and wish you all a very, very happy new year. Thank you, Sakshi, for remembering what we had recommended. I think that's where your and Shelji's expertise comes into play. You know, a lot of experts comes and they recommend a lot of things, but it's very important that how you catch the things. It's really important, and I think yes, Pharma ETF was discussed, and you know, ITBs is something which we discussed a lot, and we believe that structurally the way things are happening, the way, you know, we are discussing in the US about the Biosecure Act, although it is still not come, but the importance of the entire pharma API CDMO is getting now getting a lot more discussed post this Biosecure Act, and I think this will lead to a further rally into the entire pharma as a space, and we firmly believe the CDMO API plays in India, and typically the niche players will be very big beneficiary of this mega trend which is getting developed due to this entire Biosecure Act and other requirements which is happening. And obviously, you know, we had seen a lot of, you know, the cyclical stocks seeing some sharp sell off in the last couple of months. So clearly there is a trend which is getting developed, and a lot of money is flowing towards the pharma as an index, which is also considered as a defensive bet. So we still believe this would continue to do well. We also believe that the falling rupee is also going to benefit a lot to pharma as well as the IT as a space, and also because we believe that a lot of corporate earnings is going to improve in the US market. You can witness what kind of sell-off we have witnessed in the last 2 months from FIIs. It is more to do with a lot of this money flowing back to the US market. So ultimately there is some hope regarding the corporate profitability to improve in the US market. This will lead to a lot of discretionary IT spending going up, which will ultimately benefit IT companies in India. So we believe that structurally these two sectors, pharma and IT, will continue to do well in next couple of months as well. राइट नमस्ते आशीष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। नव वर्ष की शुभकामनाएं। आपको देखकर स्क्रीन पर तसल्ली होती है, क्योंकि अक्सर जो आप बात करते हैं उसमें ना जेएम फाइनेंशियल के क्लाइंट्स का पैसा बल्कि आपका भी इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट होता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद 2-3 स्टॉक्स के लिए। पिछली बार आप हमारे यहाँ आए थे 24 सितंबर को, और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ पीसीआर से कि 2 स्टॉक्स को आप स्क्रीन पर लाइए। ई पैक जब आशीष जी ने हमें बताया था तो उसका प्राइस था लगभग 398, ऑलमोस्ट 400। अब आपके सामने स्क्रीन पर ई पैक आएगा, और उसके बाद आप दिखाइए केनेस टेक्नोलॉजीज़ 3717 पर आपने कीनेस टेक्नोलॉजीज़ की बात करी थी, और आपका प्राइस देखिए। तो लगभग 50% से ज़्यादा रिटर्न हमारे दर्शकों ने कमाए हैं ई पैक में, और कीनेस में भाव डबल हो गया। सो 100%।
अलावा इसके आपने बहुत सारे स्टॉक्स की चर्चा करी जहाँ पर अभी भी बहुत अच्छे रिटर्न्स आते हुए दिखते हैं। तो अब ऐसा करते हैं आशीष जी, आईना जो है वो आगे की तरफ लगाते हैं और देखते हैं कि सन 2025 में क्या होगा। जो हुआ सो हुआ, उसके लिए बहुत बहुत आभार और धन्यवाद आपका, लेकिन यहाँ से आगे क्या क्या कीजिएगा? बहुत बहुत धन्यवाद शैल जी। तो बिल्कुल हम 2025 के ऊपर बात करेंगे और हमारा ये मानना है कि थोड़ा सा एक कहीं ना कहीं शैल जी आप देखेंगे कि पी के टर्म्स में मार्केट ऑलरेडी एक बहुत ही रीजनेबल वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहा है, वेदर इट्स स्मॉल कैप, वेदर इट्स मिड कैप। Maybe from a Nifty perspective, we are seeing Nifty trailing at Nifty on a forward basis is trading at almost 20 times a multiple, which is a 10-year average. So वहां पर पे शायद वैल्यूएशन का इतना बड़ा डिस्कम्फर्ट नहीं है। तो इसका मतलब है कि आने वाले समय में जो प्राइस अप्रिसिएशन आएगा स्टॉक सिलेक्शन में या सेक्टर सिलेक्शन में, इट इज मोर टू डू विद द प्रॉफिट ग्रोथ। तो जो प्रॉफिट ग्रोथ होगी वही हमें शेयर प्राइस के अप्रिसिएशन में देखने को नजर आएगा। और वहां पर पे हमें लगता है कि उन कंपनीज के अंदर फोकस करना जरूरी है जहां पर पे हमें लगता है टॉप लाइन ग्रोथ काफी अच्छी आएगी। और क्योंकि मार्जिन एक्सपेंशन ऑलरेडी बहुत सी कंपनीज ने अच्छा खासा देख चुका है, तो शायद आपको प्रॉफिटेबिलिटी में उतनी बड़ी जंप देखने को ना मिले जो हम पहले देख रहे थे कि टॉप लाइन 10% बढ़ रही है और प्रॉफिट 15 या 20% बढ़ रहा है। तो ये ऑपरेटिंग लीवरेज शायद अभी किक इन ना हो। तो ऐसे जो सेक्टर है उसमें हमें सबसे पहले लगता है ईएमएस यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग स्पेस, जिसकी अभी आपने चर्चा की कुछ स्टॉक्स की, पर मुझे लगता है इसी स्पेस में एक कंपनी है जो हमें लगता है कि अभी भी बहुत पोटेंशियल अच्छा रखती है। पहले तो डिस्क्लोजर दूंगा, ईपैक ड्यूरेबल और केन्स टेक्नोलॉजीज आज भी हमारे पोर्टफोलियो एपेक्स पीएमएस में बने हुए हैं। और इसी स्पेस की जो दूसरी कंपनी हमें पसंद है वो है सिरमा एसजीएस टेक्नोलॉजी। सो वी लाइक सिरमा एसजीएस टेक्नोलॉजी बिकॉज दिस स्टॉक इज इनटू बेसिकली ईएमएस स्पेस, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, आरएफआईडी का जो सेगमेंट है वहां पर पे काफी काम कर रहे हैं। और ये जो पूरे स्पेस है, ये जो कंपनी है, ये करीब 40% केगर आने वाले समय में अपनी टॉप लाइन को ग्रो करेगी, क्योंकि यहाँ पर पे जो एक तो ऑर्डर बुक टू बिल रेशियो वो भी काफी अच्छा है। और हमें लगता है कि जिस तरह से कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग और ईएमएस का एक इकोसिस्टम इंडिया के अंदर में बन रहा है, वो बड़ा बेनिफिट सिरमा जैसी कंपनी को करेगा। इस कंपनी के अंदर में जो 2-3 क्वार्टर से चैलेंजेस चल रहे थे वो थे ऑपरेटिंग मार्जिन के, जहां पे कंपनी की मार्जिन ड्रॉप डाउन हो गई थी, करीब 5 से 6% के आसपास आ गई थी। वो पिछले क्वार्टर में अच्छा खासा जंप आया और 9% के आसपास ऑपरेटिंग मार्जिन में इंप्रूवमेंट हुआ। हमें लगता है कि जो कंज्यूमर सेगमेंट में एक मार्जिन का जो चैलेंजेस है कंपनी फेस कर रही थी, वो चैलेंजेस आने वाले समय में जाते हुए हमें नजर आते हैं। तो जिसके चलते हमें लगता है कि मार्जिन काफी स्टेबल हो जाएगी, टॉप लाइन ग्रोथ काफी अच्छी आएगी। और टेक्निकली क्योंकि हम जो हमारी जो स्टॉक सिलेक्शन का अप्रोच है, जिसको हम कहते हैं एफटीपीएम अप्रोच, फंडामेंटली टेक्निकल्स, मार्केट डायनामिक्स और साइकोलॉजी, इस 4 चीज के कॉम्बिनेशन को ध्यान में रख के हम स्टॉक सिलेक्शन करते हैं। तो जब हम देख रहे हैं कि ये फंडामेंटली काफी इंप्रूवमेंट है, टेक्निकल नजरिए से देखेंगे तो ये स्टॉक बहुत बड़े कंसोलिडेशन को ब्रेकआउट दे रहा है। 590 600 पे बड़ा ब्रेकआउट आया है, तो मेरे हिसाब से 580 पे बहुत अच्छा सपोर्ट यहाँ देखने को नजर आएगा। 730 से 740 तक की अपसाइड हमें लगता है सिरमा एसजीएस के स्टॉक में देखने को नजर आ सकती है। तो ये हमारी एक टॉपिक रहेगी। और एज अ डिस्क्लोजर, ये स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो एपेक्स पीएमएस में भी बना हुआ है। दूसरा स्टॉक जो हमें काफी पसंद है वो कंज्यूमर कंजम्पशन सेगमेंट से है, और वो स्टॉक होगा, ऐसे तो वेल नोन है पर लोगों को लगता है कि इस लेवल पे भी पैसा बनेगा क्या। तो हमें तो लगता है कि जब हम 3,000 रुपए पे भी ट्रेंड खरीदते तो तब भी हम यही क्वेश्चन को आंसर करते थे कि ये बहुत अच्छी क्वालिटी फ्रेंचाइज है। 5,000 पे भी जब खरीदते थे तभी आंसर देते थे, और 7,000 पे भी हमारा व्यू यही है कि ये स्टॉक काफी अच्छा करेगा। 40% की टॉप लाइन ग्रोथ यहाँ देखने को नजर आएगी, प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ काफी स्ट्रांग रहेगी। 6,400 पे बहुत बड़ा ब्रेकआउट यहाँ पे भी चार्ट पे हुआ है। 8,300 से 8,500 तक की अपसाइड ट्रेंड के स्टॉक में देखने को नजर आ सकती है। एज अ डिस्क्लोजर, ये स्टॉक भी हमारे पोर्टफोलियो एपेक्स पीएमएस में बना हुआ है। चलिए, 2 स्टॉक्स बढ़िया यहाँ पर पता चल गए आशीष जी की तरफ से, सिरमा एसजीएस टेक्नोलॉजीज और ट्रेंट, जहाँ पर अभी भी भरोसा कायम है। आशीष सर, एक ये नया जो थीम काफ़ी इमर्ज हुआ 2024 में, वो था क्विक कॉमर्स का स्पेस, जोमेटो, और अब इसमें आ गया है स्विगी, अब तैयारी है जेप्टो की आने की, और ये लगातार स्पेस बढ़ता चला जाएगा। अब ये बात हो रही है कि एवेन्यू सुपरमार्ट भी शायद यहाँ पर कुछ ना कुछ अपने क्विक कॉमर्स की बिजनेस को लेकर आएगा सामने, और तब जाके देखने को मिलेगा कि वो भी आउट परफॉर्मेंस दिखा सकता है। नहीं, ये जो क्विक कॉमर्स की थीम है, इसे आप कैसे समझ रहे हैं, और क्या यहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग बेट्स अभी भी आपको नजर आ रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिहाज से? बिल्कुल साक्षी, तो ये थीम हमारी काफ़ी फेवरेट रही है। इनफैक्ट
जोमेटो पे हमने हमारी जो एंट्री पॉइंट थी हमारे पोर्टफोलियोज में, हमने 60 रुपए से उसको लेना शुरू किया और आज भी हमारे पोर्टफोलियो में बना हुआ है। इसकी चर्चा भी हमने की क्योंकि जोमेटो के अंदर में तो सबसे अच्छी बात है कि एक आप सबसे पहले फूड डिलीवरी बिजनेस प्ले कर रहे हैं, वो तो काफ़ी अच्छा कर ही रहा था, जहाँ पे ऑपरेटिंग लेवल पे पैट लेवल पे कंपनी पॉजिटिव हो चुकी थी। ब्लिंकिट का जो बिजनेस है वहां पर पे भी अच्छी खासी ग्रोथ आई और समय से पहले कंपनी ने अपने आप को एबिटा और पैट लेवल पे पॉजिटिव किया, और जिसके बाद हमने देखा कि एक बड़ी री रेटिंग जोमेटो के अंदर में देखने को मिली। और मेन बात है कि जो क्विक कॉमर्स का जो बिजनेस है वो ज्यादा बड़ा सेगमेंट है एज कम्पेयर टू फूड डिलीवरी बिजनेस, और ब्लिंकिट वहां पे 25% का मार्केट शेयर रखता है। तो हमें लगता है कि ये बिजनेस ओवरऑल ऑर्गेनिक बेसिस पे 40-45% की ग्रोथ दिखाएगा। सस्टेनेबल मार्जिन 5% के आसपास आएगी, जिसके चलते हमें लगता है अर्निंग ग्रोथ काफी अच्छी बनेगी। पर इस समय पे जोमेटो का जो वैल्यूएशन है एज कंपेयर टू स्विगी, वो ऑलमोस्ट 30 से 40% महंगा है। इसका मतलब स्विगी के अंदर में एक आपको वैल्यूएशन आर्बिट्राज देखने को नजर आ रहा है। तो दोनों ही स्टॉक हमें पसंद है, जोमेटो और स्विगी। बट अगर से मैं आज वैल्यूएशन के लिहाज से देखूं तो मुझे लगता है स्विगी के अंदर आपको जो कंफर्ट है इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन वो ज्यादा बेहतर नजर आएगी। तो एंट्री पॉइंट के लिहाज से काफी अच्छा लगता है। पर एज अ डिस्क्लोजर, स्विगी में ना सिर्फ हम हमारे पीएमएस में इसको होल्ड करते हैं, पर मेरी पर्सनल होल्डिंग भी है। तो हमें ये एज अ डिस्क्लोजर मैं दूंगा कि स्टॉक में हमारी होल्डिंग है। बट ये दोनों ही स्टॉक हमें काफी पसंद है, और एज अ थीम हमें लगता है ये थीम 2025 में भी काफी बेहतर करती हुई नजर आ सकती है, क्योंकि साइज ऑफ अपॉर्चुनिटी काफी बड़ी है। जी, आशीष जी, पिछले 3 महीने में और खासकर पिछले 15 दिनों में आपने जेएम फाइनेंशियल के पीएमएस क्लाइंट्स के लिए कोई नया शेयर खरीदा, या ये जो गिरावट का दौर हमारे सामने अब चौथे महीने में कदम रख चुका है, इसमें आपने एग्जिस्टिंग स्टॉक्स में कोई एंट्री की हो तो उसका व्याख्यान कीजिए प्लीज़। नहीं बिल्कुल, तो शैल जी, जैसे हमने कहा कि इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल यूज़ किया, और इसमें हमने सबसे पहले थोड़ा सा अपना बैंकिंग एक्सपोजर बढ़ाया, क्योंकि हमें लगता है कि वैल्यूएशन की काफ़ी कंफर्ट थी। तो वहाँ पर हमारा जो फोकस है वो प्राइवेट बैंक्स पे ज़्यादा है। तो हमने आईसीआईसीआई एचडीएफसी बैंक के अंदर हमारी थोड़ी पोजीशंस को और बढ़ाया, यानी कि थोड़ा ओवरवेट पोजीशंस में वहाँ पर पे गए हैं। हमें वैल्यूएशन की कंफर्ट भी लग रही है, और दूसरी बात, डिपॉजिट ग्रोथ इज फार बेटर देन दिस टाइम क्रेडिट ग्रोथ। तो जो एक बड़ा कंसर्न पिछले काफ़ी समय से बैंकिंग इंडस्ट्री में बना था कि डिपॉजिट ग्रो नहीं हो रहे थे, वो कंपैरेटिवली इंप्रूवमेंट हुआ है। तो मुझे लगता है कि ये स्पेस हमें काफी इंटरेस्टिंग लगता है। दूसरा जो स्पेस हमें लगता है कि कैपिटल मार्केट्स की जो थीम है उसको हम, हाँ, उसमें हम कंटिन्यूसली हमारी पोजीशन थी, पर हमने इस डिप में के अंदर में वहां पर भी काफी स्टॉक्स के अंदर पोजीशंस ली है, जैसे कि मोतीलाल ओसवाल के अंदर में हमारा एक्सपोजर है। बीएससी के अंदर में हम काफी लंबे समय से पॉजिटिव बने हुए थे। साथ ही साथ हमने जो एक स्टॉक हमें काफी पसंद है वो है सीडीएसएल, और जो पूरा इस एसेट मैनेजमेंट बिजनेस है उसमें नुआमा, और साथ ही साथ हमने आईएफएल यानी कि 361 के ऊपर फोकस किया है। तो ये जो थीम है इनके अंदर में हम, क्योंकि स्ट्रक्चरली पॉजिटिव है, इनकी डिप्स को हमने ऐड करते हुए नजर आए। और आपने देखा होगा कि ट्रेंड में करीब 8,200 से एक अच्छी खासी गिरावट आई थी, 7,000 के आसपास आया था। तो इन लेवल्स पे हमने ट्रेंड के अंदर में भी एक पोजिशन को अपनी ऐड किया है। तो ये वो स्टॉक है जहां पर में हमने इस डिप के अंदर हमारे पोर्टफोलियोज में पोजिशन ली हुई है। Ji. Ashish sir, the last time around in the run up to the budget, we saw two themes outperforming, and that was defense and railways. However, after the budget was presented and no big bang announcements came in, these two themes continued to be in a sideways consolidation and somewhere corrected also, quite a lot in individual stocks. What is your sense on these two particular stocks, especially now when we are just 3 weeks away from the upcoming union budget? जी, तो साक्षी, बिल्कुल ये इसको हम काफ़ी एग्जाम्पल भी हमारे क्लाइंट्स के सामने यूज़ करते हैं, और इसको हम आर्ट ऑफ एग्जिट के तौर पर कहते हैं। तो हमने डिफेंस को बहुत अच्छे से प्ले किया पिछले 2 सालों में, बट एग्जैक्टली आफ्टर बजट जब हमने देखा कि कोई अनाउंसमेंट नहीं आया और स्टॉक्स के वैल्यूएशन 60-70 पी मल्टीपल पे ट्रेड कर रहे थे, तो हमने उस दो चीज़ के कॉम्बिनेशन को यूज़ करके और थोड़ा टेक्निकल स्ट्रेंथ को समझते हुए इसको डिफेंस को पूरा पोर्टफोलियो से एग्जिट किया पोस्ट बजट। वहां से हमने देखा कि इंडेक्स 9-10% करेक्ट हुआ, पर डिफेंस के स्टॉक 30 से 40% का करेक्शन दिखा चुके थे। तो ये हमने उस समय पे एग्जिट ली, और अभी ऑफलेट पिछले 15-20 दिनों में हमने वापस डिफेंस के अंदर एंट्री ली है। और वहां पर पे हमारे जो स्टॉक्स थे उसमें हमने एचएएल, बीईएल और मझगांव डॉक, इन 3 स्टॉक्स के ऊपर फोकस किया, क्योंकि हमारा मानना है कि ऑर्डर बुक टू बिल अभी भी अच्छी है, और साथ ही साथ वैल्यूएशन की कंफर्ट
अब अच्छी आ गई, क्योंकि स्टॉक्स 40 टाइम्स 38 टाइम्स फॉरवर्ड के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, जो एक समय पे 65-70 फॉरवर्ड मल्टीपल पे ट्रेड कर रहे थे, तो वैल्यूएशन की भी कंफर्ट आ गई। और जिस तरह से 2025 को राजनाथ सिंह जी ने कहा है कि डिफेंस के रिफॉर्म्स के ईयर के तौर पर जाना जाएगा 2025, तो हमें लगता है कि बिग बैंग रिफॉर्म्स कहीं ना कहीं डिफेंस के अंदर आपको देखने को नजर आएंगे, और जिसका बेनिफिट बीएल, मजगांव डॉक, एचएल जैसे स्टॉक के अंदर देखने को नजर आएगा। बट इस समय पे जो एक चीज मिसिंग है, जिसको मैं कहना चाहूंगा, वो है टेक्निकल स्ट्रेंथ। तो जिस तरह की एक टेक्निकल स्ट्रेंथ हमें विजिबल होनी चाहिए, वो इस समय कहीं ना कहीं थोड़ा वेट एंड वॉच पे है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा और वेट कीजिए कंफर्मेशन का। अगर से कोई मीडियम टर्म ट्रेड के हिसाब से इन स्टॉक्स को देख रहा है, तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा और सेटअप को बनना पड़ेगा। बट एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर मुझे लगता है दिस इज अ गुड एंट्री पॉइंट। बट एज अ मीडियम टू शॉर्ट टर्म ट्रेडर शायद और टेक्निकल कंफर्मेशन की जरूरत यहाँ मुझे नजर आती है। जी, आशीष जी, मैं ये बात पूछना चाह रहा था कि बाज़ार में काफ़ी नर्वसनेस है इस बारे में कि हम ये जो गिरावट का दौर देख रहे हैं, ये बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएशंस पर है। 4 महीने ऑलरेडी हो चुके हैं लाल निशान में हम लोगों को ट्रेड करते हुए मंथ ऑन मंथ। आपको क्या लगता है 2025 में आपका जेएम फाइनेंशियल का जो पीएमएस पोर्टफोलियो है, उसका सीएजीआर क्या रहेगा? क्योंकि बहुत लोग ये कह रहे हैं कि भाई 2025 को तो आप राइट ऑफ कर दो, यहाँ पर फाइनेंशियल Q2 बुरा था, Q3 बुरा होने वाला है, और Q4 में भी अब यही डर है कि भाई कोई भी ग्रोथ कॉरपोरेट इंडिया नहीं दिखा रहा है, जीडीपी स्लो कर रहा है, रुपया डेप्रिशिएट कर रहा है, ट्रंप साहब वापस आ चुके हैं। तो ये सब एक समय है कि 2025 में आदमी चिंतन और मंथन ज़्यादा करे और ख़रीदारी कम। आपकी क्या राय है? बिल्कुल, तो शैल जी, मेरा भी कहना है कि आप आइए बॉम्बे में, बहुत अच्छी अच्छी कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं। इन कॉन्फ्रेंसेज को अटेंड कीजिए, अपने नॉलेज को, अपने जो हमने पिछले एक साल एक बड़े मोमेंटम के अंदर में बाजार देख रहे थे, तो लोगों ने थोड़ा पढ़ना कम किया और एक्शन ज़्यादा लिया। अब थोड़ा सा उसका विपरीत होगा, पढ़ना ज़्यादा होगा, एक्शन कम लेना होगा। और मेरे हिसाब से बिल्कुल थोड़ा सा वोलेटाइल रहेगा। थोड़ा सा मैंने इसलिए शुरू में ही कहा कि मार्जिन एक्सपांशन का स्कोप कम है, पीई के एक्सपेंशन का स्कोप कम है। तो जो आपको शेयर का अप्रिसिएशन मिलेगा, वो मिलेगा कि कितनी टॉप लाइन ग्रोथ हो रही है और कितनी प्रॉफिट ग्रोथ हो रही है। और क्योंकि प्रॉफिट ग्रोथ में मार्जिन एक्सपेंशन का स्कोप ऑलरेडी कम है, तो इसका मतलब मोटा मोटी जो टॉप लाइन ग्रोथ हो रही है, वही रिफ्लेक्शन कहीं ना कहीं शेयर प्राइस दिखाएंगे। अब इसके अंदर आपने बिल्कुल सही कहा कि जब जीडीपी की ग्रोथ में थोड़ा सा अभी हम देख रहे हैं कि एक नरमी बनी हुई है, साथ ही साथ यूएस और जियोपॉलिटिकल जो कंसर्न्स इस समय बने हुए हैं, उसके चलते भी एक बड़ी टॉप लाइन ग्रोथ एक्सपेक्टेड नहीं है। तो आपको बहुत ही स्टॉक स्पेसिफिक, सेक्टर स्पेसिफिक होना पड़ेगा। अब जैसे कि आईटी है, तो आईटी में कहीं ना कहीं डिस्क्रिशनरी आईटी स्पेंडिंग के इंप्रूव होने के काफी चांसेस है, तो वहां पे हमें एक पॉजिटिव होप नजर आती है। फार्मा के अंदर हमने जैसे कहा कि वो एक ऐसा सेक्टर है जिसका बहुत बड़ा बेनिफिट हमको ग्लोबल जो ये जो सप्लाई चेन डायनामिक्स चेंज होंगे, उसका बेनिफिट मिलेगा, तो उसकी वजह से फार्मा अच्छा कर सकता है। तीसरा है कि कहीं ना कहीं मानसून इस बार बेटर रहने के चांसेस है, वाटर रिजर्वायर्स लेवल काफी बेहतर है, और रूरल जो इकोनॉमी उसने काफी लंबे समय से परफॉर्म नहीं किया, तो वहां पर पे मुझे लगता है थोड़ी होप है। और जिसके चलते कुछ सेलेक्टिव ऐसे स्टॉक जो रूरल इकोनॉमी का बेनिफिशियरी है, वहां पर पे कुछ सेलेक्टिवली हमें स्टॉक्स में सिलेक्शन करना पड़ेगा। बट ये बिल्कुल सही है कि 2025 में 2024 या 2023 जैसे रिटर्न बनने के चांसेस कम है। तो एज अ मनी मैनेजर हमारी थॉट ये है कि वोलेटिलिटी में हम कैसे हमारे पोर्टफोलियो की डाउन साइड को प्रोटेक्ट करें और अप साइड में रीजनेबली पार्टिसिपेट करें। हमें यहाँ पे हाई रिस्क इस समय पोर्टफोलियो को नहीं करना चाहिए, तो बहुत ही रीजनेबल एक्सपेक्टेशन के साथ बाजार में उतरना चाहिए। और जब हम कह रहे हैं 6-7% इकोनॉमी ग्रो करेगी, 4% का इन्फ्लेशन, तो 10-11% की अगर से नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ है, तो उसको कैसे ब्रॉडली आउट परफॉर्म करें, ये एम इस समय पोर्टफोलियो मैनेजर्स का मुझे लगता है पूरी इंडस्ट्री के अंदर बना रहेगा। बहुत ही बढ़िया तरीके से आपने एक व्याख्यान किया है कि किस तरीके से लोगों को इस नए साल में अपनी स्ट्रैटेजी बनानी है और कैसे इस बाज़ार को संभल कर प्ले करना है। ऐसे में जिस तरीके से आपने शुरुआत की थी और हम लोगों ने भी आपको की सराहना की थी कि आपने फार्मा की ईटीएफ, आईटी की ईटीएफ के बारे में बात की, तो ईटीएफ क्या एक बढ़िया तरीका हो सकता है 2025 में भी एक स्लोली एंड स्टेडीली एसआईपी के ज़रिए निवेश करते रहने का, और बाज़ार में जिस भी तरीके के वॉलेटाइल मूव्स आएँ उसमें बेटर अल्फा क्रिएट करने का अपने लिए? और कौन सा ईटीएफ आप सजेस्ट करेंगे 2025 के लिए?
बिल्कुल साक्षी, तो मेरे हिसाब से तो हर बाजार में ईटीएफ आपके पोर्टफोलियो का एक हिस्सा होना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब आप ईटीएफ जब उस सेक्टर पे बेट करना चाहते हो, उस समय पे सेक्टर में बहुत सारी हेडविंड्स चलती रहती है, और तब आप पूछे कि इसमें से कौन सा स्टॉक अर्निंग ग्रोथ दिखाएगा, टॉप लाइन ग्रोथ दिखाएगा, ये किसी को मालूम नहीं होता। इसका मतलब है तब आप ये बेट ले रहे हैं कि खराब समय में अगर से आप एक सेक्टर जो कि जिसने प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है 5 ईयर 10 ईयर में काफी अच्छा किया है, उस हेडविंड पे अगर से जब आप उस सेक्टर के अंदर में बेट लेना शुरू करते हैं, तब उसके अंदर इमीडिएट कोई टारगेट नहीं होता, इमीडिएट कोई ट्रिगर्स नहीं होते, बट आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के तौर पे जब उसको एवरेज कर लेते हैं तो आपकी एंट्री पॉइंट काफी अच्छी होती है। अब मेरे हिसाब से इस समय पे जो 3 ईटीएफ मुझे लगता है कि आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा होना चाहिए और जो काफी अच्छा कर सकते हैं, उसमें सबसे पहले मैं कहूंगा फार्मा का ईटीएफ होना चाहिए, दूसरा होना चाहिए आईटी का ईटीएफ, और तीसरा होना चाहिए बैंक 20 का ईटीएफ। क्योंकि मुझे लगता है बैंक्स के अंदर में वैल्यूएशन की कंफर्ट बहुत अच्छी है, आपका डिपॉजिट ग्रोथ बहुत बेटर होने वाला है, और यहाँ पर पे क्वालिटी जो बैंक्स है वो कहीं ना कहीं अगर से यहाँ पे क्रेडिट एनवायरनमेंट खराब होता है, एनपीए के नंबर्स में कोई बढ़त आती है, तो उसको प्राइवेट बैंक्स जो है एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी में बहुत बेहतरीन पोजीशन पे, एज कंपेयर टू स्मॉलर प्राइवेट बैंक या इवन पीएसयू बैंक्स। तो इसके चलते मुझे लगता है कि बैंक 20 का ईटीएफ, जिसके अंदर में एक अच्छा खासा एक्सपोजर लार्ज कैप बैंक्स का है, उस ईटीएफ के अंदर में अगर से हम पोजीशन बनाते हैं तो ये साल मुझे लगता है इन 3 ईटीएफ के लिए बेहतरीन होते हुए नजर आ सकते 941 लेडीज एंड जेंटलमैन, जैसे ही आशीष जी का चेहरा बाजार ने स्क्रीन पर देखा, एक हरी चादर आपको बाजार में बिछती हुई दिख रही है। 180 170 अंक निफ्टी ऊपर, 400 अंक निफ्टी बैंक में इजाफा, और आईटी इंडेक्स में भी अच्छा मोमेंटम आता जा रहा है। साथ ही साथ और देखते हैं ब्रॉडर मार्केट्स में आपको किस तरीके का मोमेंटम दिखता है। एडवांस डिक्लाइन रेशियोज पर नज़र डालते हैं। 1907 शेयर हरे निशान में, लगभग 400 लाल निशान में। साक्षी और मैं 19 इंडिसेस ट्रैक करते हैं, 19 के 19 हरे निशान में। आशीष जी, अगर आप एक आध 2 हफ्ते लगातार आए ना, तो वापस बाजार में रिकॉर्ड हाई आपको लगता हुआ दिख सकता है। ये आपके फायदे के लिए भी होगा, निवेशकों के लिए भी, और ट्रेडर्स में भी वापस जान आती हुई दिखेगी। एक चीज़ बाजार में जो नदारद है, दिसंबर में सेंटा रैली थी और अब प्री बजट लाइनअप होता हुआ दिख नहीं रहा। 18 दिन बचे हैं इस बजट के अनावरण के लिए। बताइए एक दो सेक्टर्स, एक दो स्टॉक्स जहां पर अच्छी चाल आ सकती हो। नहीं तो शैल जी देखिए, एक चीज पे हम थोड़ा जो अभी हमने चर्चा भी की कि डिफेंस पे हमने थोड़ा जो बेट ली है वो हमने बजट को ही ध्यान में रख के लिए, क्योंकि हमारा ये मानना है कि केपेक्स की जो साइकिल है वो कहीं भी रुकेगी नहीं। आप देखेंगे कि चाहे स्टेट इलेक्शन हो, उसमें भी थोड़ा बहुत फ्रीबीज का एक एनवायरनमेंट बना। मोटा मोटी जीडीपी का 0.8-0.9% इस समय पे सोशल इसमें स्पेंड किया जा रहा है, बट उसके बावजूद भी जो केपेक्स के ऊपर गवर्नमेंट का कंटिन्यूस फोकस है वो क्लियरली नजर आता है। फर्स्ट हाफ में हमने देखा कि ये केपेक्स 4-4.5 लाख करोड़ का हुआ, तो एक अच्छा खासा जो गैप है वो सेकंड हाफ में हमें लगता है कवर अप करते हुए नजर आएंगे। और यहाँ पर पे आप जो केपेक्स रिलेटेड थीम में कुछ देखें तो सबसे पहले डिफेंस आएगा। वहां पे हमने बात की मझगांव, बीईएल और एचएल, इन स्टॉक्स के ऊपर फोकस होना चाहिए। सेकंड हमें लगता है कि डिफेंस के थोड़ा सा मैन्युफैक्चरिंग में आप और देखें तो पावर ऐसा सेक्टर है जहां पर पे काफी काम होगा, और पावर के स्टॉक्स में एक अच्छी खासी गिरावट हमने पिछले कुछ दिनों में देखी, चाहे वो एनटीपीसी हो, टाटा पावर हो, इन सभी स्टॉक्स के अंदर में करेक्शन आया, पर अब यहाँ पे मुझे लगता है अच्छा एंट्री पॉइंट है। तो एनटीपीसी की हम चर्चा करें तो एनटीपीसी के अंदर में जो ऑल टाइम हाई था वो 450 के आसपास था, स्टॉक अब 330 रुपए के आसपास आ गया है। तो मेरे हिसाब से रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है यहाँ पे, और इस स्टॉक में भी मुझे लगता है कि एक अच्छी खासी अपसाइड बजट तक, प्री बजट रैली के तौर पर इसके अंदर देखने को नजर आ सकता है। एज अ डिस्क्लोजर इन स्टॉक्स में हमारी पोजीशन है, तो एक हमारा बायस्ड ओपिनियन यहाँ पर पे नजर आ सकता है। ओके, तो चलिए ये तो हुई पावर स्पेस की बात। इसके अलावा अगर हम बात करें मिड और स्मॉल कैप स्पेस में से, आशीष जी आपको कहाँ पर सबसे ज़्यादा वैल्यूएशन कंफर्ट और बेहतर मूव्स आते हुए नज़र आएंगे? कोई की सेगमेंट्स हैं या की स्टॉक्स हैं जो कि मिड और स्मॉल कैप के स्पेसिफिक हों, जहाँ पर आप उम्मीद कर रहे हैं कि इस साल बेहतर रिटर्न्स देखने को मिले? तो स्टॉक स्पेसिफिक हम उसमें व्यू ले रहे हैं साक्षी, क्योंकि सेक्टर थोड़ा सा यहाँ पर हम बॉटम अप अप्रोच करने की कोशिश करते हैं। तो जैसे हमने ऑलरेडी ईएमएस की बात की, तो सिरमा हमारे लिए एक स्मॉल कैप है। रिसाइकलिंग थीम पे हम काफी पॉजिटिव हैं, और रिसाइकलिंग में जो कंपनी जिसने स्ट्रक्चरली
अर्निंग ग्रोथ काफी अच्छी दी, ऑपरेटिंग कैश फ्लोज काफी अच्छे जनरेट कर रही है, इन सारे पैरामीटर्स पे हमें सूट करती है, वो है ग्रेविटा इंडिया। तो ग्रेविटा में हमारा मानना है कि एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन पिछले 6 महीनों से हो चुका है, और स्टॉक में कहीं ना कहीं टेक्निकली भी अब 2150 पे बहुत बढ़िया बेस बना है। तो मैं समझता हूँ कि इस साल शायद 2700 से 2800 तक की एक रैली आपको ग्रेविटा इंडिया के स्टॉक में देखने को नजर आ सकती है। साथ ही साथ हम कुछ जो थीमेटिक थीम प्ले कर रहे हैं उसमें, जैसे कि आप देखेंगे लैब ग्रोन डायमंड, एक ही हमें थीम है, काफी इंटरेस्टिंग लगती है, हालांकि बहुत ही इमर्जिंग है, अब इसमें कुछ आने वाले समय में हो सकते हैं चैलेंजेस भी आते हुए देखने को नजर आए, बट जिस तरह की साइज ऑफ अपॉर्चुनिटी है वो हमें काफी पसंद है। जैसे आप देखेंगे ज्वेलरी मार्केट करीब $80 बिलियन का मार्केट है, जो मोटा मोटी $120 बिलियन की तरफ आते हुए नजर आएगा। और इसमें अगर से आप डायमंड की सेल्स देखेंगे तो सिर्फ $5 बिलियन की, और वो भी आज की डेट में नेचुरल ग्रोन नेचुरल डायमंड के ऊपर है। तो आने वाले समय में जब हमें लगता है कि एक मास कहीं ना कहीं अडॉप्शन होगा, तो लैब ग्रोन डायमंड उसके बड़े बेनिफिशियरी रहेंगे। और वहां पर एक कंपनी है गोल्डियम इंटरनेशनल, जो इस सेगमेंट में जिन्होंने नए स्टोर एडिशंस करना शुरू किए, तो वो हमें काफी इंटरेस्टिंग लगती है। हालांकि थोड़ा हाई रिस्क बेट हमें नजर आती है, बट स्टिल हमें लगता है कि क्योंकि एक बड़ा थीमेटिक थीम है तो ये काफी अच्छा लगता है। इसमें भी ₹400 पे बहुत अच्छा एक सपोर्ट बना है, और हमें लगता है ₹550 तक की अपसाइड इस स्टॉक में भी देखने को नजर आ सकती है। बट एज अ डिस्क्लोजर, ये स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो एपेक्स में है, और कहीं पे भी हमें इसके अंदर एक मैं डिस्क्लेमर ये भी देना चाहूंगा कि कहीं पे भी इनमें कोई बड़े टेक्निकल ब्रेकडाउन आए या कोई फंडामेंटल चेंज आया, तो हम इसमें हेजिटेट भी नहीं करेंगे अपनी पोजीशंस को कट करने के लिए या कम करने के लिए। चलिए, अगर आप आईटीसी का स्टॉक प्राइस देखें तो देवियों सज्जनों, यहाँ पर बहुत पैसा आशीष जी ने अपने क्लाइंट्स को कमवाया है। लगभग 180 रुपये से ये जो बुलिश हुए हैं वहाँ पे 440 तक की चाल हम लोगों ने देखी। अब थोड़ा बहुत कंसोलिडेट कर रहा है शेयर। इसी तरीके से कोल इंडिया पर आपकी बहुत पैनी नज़र रही, वहाँ पर भी ज़बरदस्त मुनाफा कमाया गया। पीएसयू बास्केट एज अ होल आपको कैसा लग रहा है आजकल आशीष जी? आपने अलग तौर पर बैंक्स और डिफेंस पर चर्चा करी, लेकिन वो जो एक समा था, वो जो एक माहौल था तेज़ी का, साक्षी और मैं अक्सर चर्चा करते थे छोटा टिकट बड़ा आइटम, वहाँ पर अब जो है माहौल बिल्कुल बदल सा गया है। अलावा बैंक्स और डिफेंस के पीएसयूज में आप कहाँ शॉपिंग कर रहे हैं? मेटल्स आपका बड़ा पसंदीदा सेक्टर रहा रहता था। जी, तो मेरा वही कहना है शैल जी कि शायद इस बार हमें बहुत सेलेक्टिव होने की जरूरत है, क्योंकि ये बजट बहुत ही क्रिटिकल होगा। इसमें किस तरह के सेक्टर पे गवर्नमेंट का फोकस है उसके बाद ही तो मुझे नहीं लगता कि ये ओवरऑल ब्रॉड बेस्ड रैली पूरे पीएसयू में आ जाएगी या पूरे पीएसयू बैंक में आ जाएगी। वो जो एक टाइम था जो हमने देखा 2021, 22, 23, 24 तक चला, उसमें अब हमें लगता है कि बहुत सेलेक्टिव होने की जरूरत है। जैसे अभी भी हम डिफेंस के कुछ सेलेक्टिव स्टॉक में पॉजिटिव है, या हमने जैसे पावर की बात की तो हमें लगता है एनटीपीसी काफी अच्छा कर सकता है। तो बहुत सेलेक्टिव होने की जरूरत है। शायद पूरा बास्केट इस समय पे प्ले करना के लिए हमें कुछ और कंफर्मेशन चाहिए। तो मेरे हिसाब से इस समय पर इन्हीं स्टॉक्स के ऊपर एक हमारा ध्यान है, और हम भी वेट कर रहे हैं बजट का, बजट कैसा आता है उसके बाद शायद हम हमारी स्ट्रेटेजीज में या हमारी पूरे थॉट प्रोसेस के अंदर में हमारे चेंज लेकर आए। बट इस समय पे बहुत सेलेक्टिव होना हम पसंद कर रहे हैं। Okay. Ashish sir, what are you really looking forward to in the building materials, cement space, real estate? Is this space also looking interesting to you? We have been seeing a lot of mergers, acquisitions, news flows happening here. How are you looking at this space for 2025? तो देखिए, सीमेंट में तो एक ही स्टॉक जिन पे साक्षी हमने अपनी पोजीशन ली है, और हम पिछले जब से हमारा पोर्टफोलियो चालू है तब से डे वन से वो स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो में, वो है अल्ट्राटेक सीमेंट। जी। अब कहने के लिए तकलीफ ये आती है क्योंकि वो स्टॉक बहुत बड़ा होता है तो कई बार इन्वेस्टर, बट पॉइंट ये कि वही कंपनी है जो इस पूरे कंसोलिडेशन का, पूरे जो सेक्टर के अंदर कंसोलिडेशन हो रहा है उसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी है। मल्टीपल के टर्म्स में महंगा दिखेगा, बट आप अर्निंग ग्रोथ की क्वालिटी देखिए, कैश फ्लो कन्वर्जन की क्वालिटी देखिए, उनका डाइवर्सिफिकेशन देखिए, ये सबको देखते हुए लगता है कि अल्ट्राटेक की हमारी टॉप बेट होगी पूरे सीमेंट स्पेस में।
दूसरे जो हमें जो स्पेस काफी पसंद आता है, पूरा इस रियल एस्टेट साइकिल को, इंफ्रा केपेक्स की साइकिल को, या इवन जो हम कहते हैं रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर में आपको ग्रिड कनेक्टिविटी से लेकर ट्रांसमिशन से लेकर के केबल से पूरा प्ले करना है, तो इसके लिए वायर्स एंड केबल्स का जो सेगमेंट है वो हमारा प्रेफर्ड बेट रहा। इसके अंदर में 3 स्टॉक्स जो हमारे पोर्टफोलियो में बने हुए हैं और हमें आज भी अच्छे लगते हैं, वो है पॉलीकैब, केईआई इंडस्ट्रीज और अपार इंडस्ट्रीज। ये तीनों स्टॉक्स हमें लगता है कि स्ट्रक्चरली 16-17% की टॉप लाइन ग्रोथ करेंगे। प्रॉफिट ग्रोथ इनकी काफी अच्छी रहेगी। यहाँ पर पे आप कैपेसिटी एक्सपेंशन कंटिन्यूस बेसिस पे देखेंगे, आप देख रहे हैं किस तरह से केईआई ने नया कंटिन्यूस आपका केपेक्स किया है, और 10,000 करोड़ तक की टॉप लाइन की लाने की बात यहाँ पर पे भी आ रही है। अपार इंडस्ट्रीज क्लियर बेनिफिशियरी है रिन्यूएबल एनर्जी का जो सेगमेंट है उसको प्ले करने के लिए, तो अपार हमारी टॉपिक रहेगी, जहां हमें लगता है कि स्टॉक 12,500 से 13,000 रुपए तक की अपसाइड दिखा सकता है। और टेक्निकली भी आप देखेंगे बहुत बेहतरीन ब्रेकआउट अब इस स्टॉक ने 6 महीने के कंसोलिडेशन करके किया है, तो मेरे हिसाब से 10,800 पे एक अच्छा सपोर्ट है, और ये स्टॉक 12,500-13,000 तक की एक अपसाइड दिखा सकता है। और ये तीनों स्टॉक जैसे मैंने कहा हमारे पोर्टफोलियोज में बने हुए हैं। आशीष जी, चर्चा कीजिए एफएमसीजी क्षेत्र की। हम लोग ये सवाल कई दिग्गजों से बाजार में पूछ रहे हैं। आईटीसी खासकर एक डीमर्जर हुआ, और होटल्स जहां पर आजकल कमरे मिलने बिल्कुल ही मुश्किल हो रहे हैं, अब आईटीसी होटल्स दोबारा एक अपने आप में लिस्टेड स्पेस में वापस आया 20-25 साल के दायरे के बाद। आईटीसी होटल्स पर क्या राय, और आईटीसी में क्या करना चाहिए? बिल्कुल, तो होटल इंडस्ट्री पे तो विशाल जी हम काफ़ी पॉजिटिव ही रहेंगे, क्योंकि आप देखिए कि ये बात ये नहीं कि वैल्यूएशन क्या है, ये सबसे बड़ी बात है कि ट्रेंड कैसे चेंज हुआ है। आप देखिए पोस्ट कोविड ये जो ट्रेंड चेंज हुआ है, ये कहीं ना कहीं इसने रुकने का नाम नहीं लिया, ये कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। किसी ने कहा हो सकता है कि ये एक रिवेंज ट्रेवल है, मे बी शायद आपको 1-2 क्वार्टर 1 साल देखने को नजर आए, उसके बाद ना, पर आप देखिए कोविड कहाँ था, हम आज कहाँ खड़े हैं, और आज भी अब जो एक आप देख रहे हैं कंटिन्यूस ट्रेंड बन रहा है, जिसकी वजह से रूम रेट्स डबल हो चुके हैं, कैपेसिटी आपका रूम यूटिलाइजेशन जो रेट है वो बढ़ चुका है, और सप्लाई में बहुत लिमिटेड सप्लाई एडिशन हो पा रहा है, जिसका बेनिफिट आईटीसी होटल, पार्क होटल, इंडियन होटल, आप इन होटल्स की बात करें तो इनको सभी को देखने को नजर आएगा। और मैं तो समझता हूँ कि आईटीसी होटल का शायद लोग वेट ही कर रहे थे कि ये कब डीमर्ज हो, जिसके अंदर में लोग पोजीशन ले सकें। तो मुझे लगता है कि ये थीम तो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगी। यहाँ पर पे कोई भी डिप आए तो ये एक इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। जहाँ तक कि एफएमसीजी का सवाल है, मैं समझता हूँ बहुत सेलेक्टिव होने की ज़रूरत है, क्योंकि जैसे मैंने कहा, एक तो टॉप लाइन ग्रोथ नहीं आ रही है, अब रूरल इकोनॉमी के कुछ पिकअप के चांसेस यहाँ नजर आ रहे हैं, तो उसके अंदर में हमें लगता है कि सेलेक्टिव होके स्टॉक्स को देखना चाहिए। वहां पर पे हिंदुस्तान लीवर हमें लगता है थोड़ा हमें ठीक लगता है, उसके बाद में साथ ही साथ अगर से मैरिको की बात करें तो वो ठीक लगता है, बट मुझे लगता है कि वो अल्फा जनरेशन नहीं होगा जो हम बाकी स्पेस से देख रहे हैं। तो इसलिए ओवरऑल आप देखेंगे तो हम एफएमसीजी के अंदर में अंडरवेट है, हमारी कोई बड़ी पोजीशन इस सेक्टर पे अभी तक हमने नहीं बनाई हुई। Okay. Another space that we will take your view, Ashish sir, is the auto space again. How are you really looking at this space? A lot of challenges, were seen, in this space for two-wheelers as well as for four-wheelers. In the second half, there has been an absolute missing festive demand and muted consumer demand. How are you really looking at it and navigating it through this theme in 2025, sir? So, what we realize is that ultimately आप देखेंगे कि ऑटो स्पेस के अंदर में रूरल इकोनॉमी के पिकअप का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। मॉनसून बेटर है, जैसे हमने कहा रिजर्वायर लेवल बेटर है, तो इसका बेनिफिट पहले तो ऑटो इंडस्ट्री को मिलेगा। सेकंड, ये जो 2% का पेनिट्रेशन ईवी सेगमेंट का है, ये 4.5% पर जाने की तैयारी कर रहा है, जिसका बेनिफिट अगेन वो कंपनियां जो कि फोर फ्रंट पे प्ले कर रही है ईवी सेगमेंट के लिए, उनके अंदर में क्लियर बेनिफिट देखने को मिलेगा। इसलिए आप देखिए बाजार में एक अच्छी खासी गिरावट रही, बट महिंद्रा ऑलमोस्ट नए ऑल टाइम हाई पर आ गया, क्योंकि वहां पर पे जो ईवी का एक्सपोजर है वो काफी बेहतर है। तो हमें लगता है कि ये एक ऐसा स्पेस है जो काफी अच्छा, ये कंपनी काफी अच्छा कर सकती है। तो हमारी टॉपिक इस पूरे फोर व्हीलर सेगमेंट में अगर से कोई रहेगी या पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में रहेगी, तो पहले तो महिंद्रा रहेगी, जहां पे हमें लगता है कि
3500 से 3600 तक के लेवल्स आपको महिंद्रा महिंद्रा के अंदर में देखने को नजर आ सकते हैं। अगर से मैं टू व्हीलर ऑटो की बात करूं तो वहां टीवीएस मोटर जिसने की ईवी सेगमेंट पे काफी अच्छा प्ले किया है, उसमें ये जो डिप आई है उसको हम प्ले करने की कोशिश करेंगे, और हमारे हिसाब से 2300-2400 पे स्टॉक एक बहुत बढ़िया कंसोलिडेशन कर रहा है, तो यहां से रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल लगती है, और हमें लगता है 2700 से 2800 तक की अपसाइड टीवीएस मोटर्स के स्टॉक में देखने को नजर आ सकती है। तो ये दो स्टॉक हैं जो हमें लगता है ऑटो सेगमेंट में प्ले करने के लिए हमें काफी प्रॉमिसिंग लग रहे हैं। बट जो बड़ा अल्फा बनेगा वो बनेगा मेरे हिसाब से ऑटो एंसिलरी कंपनीज के अंदर में, जहां पे मुझे लगता है कि कंटेंट पर व्हीकल जो कंपनी अपनी बढ़ा रही है ईवी के अंदर में, जो काफी अच्छा पार्टिसिपेट कर रही है, उनके अंदर में जो अपसाइड है वो बेहतर हो सकती है। तो वहां पर पे उनो मिंडा, पीएम इंडस्ट्रीज, ये जो कंपनियां हैं, ये मुझे लगता है इनके अंदर में काफी अच्छा काम होता हुआ नजर आ रहा है, तो इनके ऊपर हमारा एक ध्यान इस समय बना हुआ है। 9:55 आशीष जी, बिल्कुल मन नहीं कर रहा आपको टाटा करने का, लेकिन समय आपका हमसे ज़्यादा कीमती है और बहुत कुछ बचा है। जाने से पहले बस एक प्रश्न, आईपीओ की दुनिया में किसी भी तरीके की कोई हिचकी नहीं है जो कि हम देख रहे हैं सेकेंडरी मार्केट्स में। यहाँ पर आपने किसी न्यूली लिस्टेड आईपीओ में जिसने 5-6 महीने बिता लिए हो उसमें एंट्री ली हो, उसकी अगर आप चर्चा कर पाएँ तो। बिल्कुल शैल जी, तो हमने जैसे कहा स्विगी पे मैंने पोजीशन पर्सनल लेवल पे भी हमने आईपीओ के अंदर में इस स्टॉक के अंदर में की थी, और हमें लगता है कि एक जो वैल्यूएशन कंफर्ट है वो बहुत ही अच्छा है स्विगी के अंदर में, और ग्रोथ के पर्सपेक्टिव पे हम काफ़ी पॉजिटिव हैं। तो ऐसे तो बहुत स्टॉक्स आए, पर अभी भी वहाँ पर पे कई स्टॉक है जहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी को लेकर क्वेश्चन मार्क है, जहाँ पर पे कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी को लेकर क्वेश्चन मार्क है। बट स्विगी और जोमेटो ये हमें काफ़ी पसंद आते हैं, क्योंकि ये एक ऐसे प्लेयर है जिन्होंने अपने आप को स्टेब्लिश कर लिया है। तो स्विगी पे मुझे लगता है कि डिप एज हो सकता है, मेरा बायस्ड ओपिनियन भी हो, क्योंकि इसमें हमारी भी पोजीशन है पोर्टफोलियो पर मुझे लगता है ये स्टॉक काफ़ी बेहतर कर सकता है। तो ये एक स्टॉक है जो जो हमें काफ़ी पसंद है। और जहाँ तक कि आपने कहा कि आईपीओ का मार्केट, तो बिल्कुल आईपीओ के मार्केट में अभी भी कोई बिल्कुल होड़ लगी हुई है। आप देखिए, चाहे प्री आईपीओ अपॉर्चुनिटीज की बात करें, चाहे एंकर बुक्स की बात करें, तो आप देख रहे हैं कि एक बड़ी होड़ लगी हुई है, और काफी अभी भी इंटरेस्ट इस पूरे स्पेस में बना हुआ है, तो इसको काफी हम वॉचफुल हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद शैल जी, आपने मुझे शो पे अपने इनवाइट किया। साक्षी और आपको नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और धन्यवाद मुझे अपने शो पे बुलाने के लिए। Thank you, sir. The pleasure was ours indeed. And we hope that you continue to keep coming very often in 2025 and keep guiding us and our viewers in the same fashion that you do. You share one of the best insights that we get from our top market masters in 2025 and have been getting on our Market Master series as well. So thank you so much. We continue to hope that you find more time for us in this new year. Definitely. Thank you. Okay, 3 minutes to go before we wind up this morning edition. Well, 60 points higher, no complaints, 23,675, slowly and gradually inching up. Large part of the market still showing a shade of green. Barring the IT and the auto pack, rest of the sectors are still holding up. It's the oil and gas that's outperforming, 1.4% higher, with ONGC as the top mover today on the Nifty. Then metals, consumer durables, FMCG and small caps, these are the ones that are actually hovering higher. On the Nifty, beyond ONGC, you have Tata Consumer, Titan, Britannia as the top movers right now, and Asian Paints also ticking higher now, 1.2% up. Adani Group stocks are actually doing well today. Adani Enterprises up 1.2%, but most of the stocks are up and about. Reliance Industries is supporting the market sentiment as well, over 1% uptick for this one. So it's the heavyweight counters that are definitely inching higher and throwing their weight behind the bulls right now. When we look at the downside, you have TCS, Tech Mahindra, HCL Tech, Wipro. So the IT pack ahead of the earnings is showing us some nervousness, and therefore there is some decline on that front. PSU stocks still in the thick shape, about 0.8% higher. Beyond oil and gas, you also have stocks like BHEL, IRCTC, Steel Authority as the stocks that are doing well. You have Biocon as the top mover in the F&O pack today, along with ONGC and Oil India. These are the top three movers. Whereas on the downside, you have Zomato, PVR Inox and Info Edge and Angel One as the stocks that are declining in the F&O space. Anything else, Shell, that you want to point out before we wind in?
Yes, Sakshi. The intraday high of the Nifty has been taken out by the bears, and as I have said, that is a point of concern. The high was 23,795. Basically, a lot of heavy uh, uh, call writing has happened at 23,800, and that's the reason why you see a 125 point dip on the Nifty from its intraday high. If you look at the bank Nifty, we have 50,050 on the charts, but the intraday high for the index is fairly substantial. It's 50,362. So heavy selling pressure is what happens on an intraday high, and that is getting manifested in the market. It's completely defensive today. We are hoping that we will at least end up in positive territory. The early gains are getting sold into. Sakshi and I will be back at the 2:30 wheel. Please do stay tuned into Business Today Television. Thank you for watching. साथियों, ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए बहुत आवश्यक है कि गांव में हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए आर्थिक नीतियां बने। मुझे खुशी है कि पिछले 10 साल में हमारी सरकार ने गांव के हर वर्ग के लिए विशेष नीतियां बनाई हैं, निर्णय लिए हैं। 2-3 दिन पहले ही कैबिनेट ने पीएम फसल बीमा योजना को 1 वर्ष अधिक तक जारी रखने की मंजूरी दे दी। डीएपी दुनिया में उसका दाम बढ़ता ही चला जा रहा है, आसमान को छू रहा है। अगर वो दुनिया में जो दाम चल रहे हैं, अगर उस हिसाब से हमारे देश के किसान को खरीदना पड़ता तो वो बोझ में ऐसा दब जाता, किसान कभी खड़ा ही नहीं हो सकता। लेकिन हमने निर्णय किया कि दुनिया में जो भी परिस्थिति हो, कितना ही बोझ न क्यों बढ़े, लेकिन हम किसान के सर पर बोझ नहीं आने देंगे। और डीएपी में अगर सब्सिडी बढ़ानी पड़ी तो बढ़ा करके भी उसके दाम को स्थिर रख